Welcome back everyone in this YouTube channel Being Yourself. So we have discussed major text M.C.Qs, major authors M.C.Qs, and now we will go for important literary moments of history of English literature. So let's begin from question number 61. The Pre-Raphaelites became closely associated with which of the following movement? So Pre-Raphaelite was a group of 7 painters which came in 1848 and named after Italian painter Raphael. और ये रोमांटिसिज्म और मेडाइवल कल्चर से भी इन्फ्लुएंस था. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड सी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी पीरियड फोकस्ड ऑन इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म? कौन सा लिटरेरी पीरियड इमोशन, नेचर और इंडिविजुअलिज्म यानी खुद पे फोकस करता था? इसका राइट आंसर है रोमांटिसिज्म. वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की 1798 में लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ये एज स्टार्ट होती है. इस एज को सेकेंड क्रिएटिव पीरियड भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ लैंग्वेज एंड फॉर्म? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट ट्रेडिशनल यानी पुराने फॉर्म्स को रिजेक्ट करता था और लैंग्वेज और फॉर्म्स पे फोकस करता था? इसका राइट आंसर है मॉडर्निज्म. मॉडर्निज्म लगभग 1890 से 1950 तक के टाइम पीरियड तक चला था, मोस्टली वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे. इफ यू नो देन कमेंट हु रोट द नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्लम रेनेसा वाज अ लिटरेरी मूवमेंट प्राइमरली इन्वॉल्विंग विच ग्रुप ऑफ पीपल? हार्लम रेनेसा एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें कि कौन सी ग्रुप ऑफ लोग आते हैं? तो हार्लम रेनेसा 1918 से 1937 तक चली थी. ये ब्लैक्स नेगरो मूवमेंट का पार्ट है और हार्लम एक जगह है इन न्यूयॉर्क जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सारे ब्लैक पीपल को अफ्रीका से लाकर अमेरिका में बसाया था. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अफ्रीकन अमेरिकन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी मूवमेंट इमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एम्फेसाइज्ड ऑन इमोशंस एंड इमेजिनेशन? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट एक रिएक्शन था अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इमोशन और इमेजिनेशन पे फोकस करता था? इसका राइट आंसर है रोमांटिसिज्म. एंड कमेंट इफ यू नो दैट हु सेड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. Which literary movement focused on the exploration of the subconscious mind and dream? Right answer of this question is surrealism. ये मूवमेंट 1920s से 1950s के बीच तक चली थी इन यूरोप. These questions are very important. अगर आप सारे मूवमेंट्स को नहीं पढ़ पा रहे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑफ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड यू विल एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. इसलिए ध्यान से सुनना और सारे मूवमेंट्स को याद रखना. Next question, which literary movement focused on capturing the essence of daily life through detailed observations? So the right answer of this question is realism. Next question number 68. The Transcendentalist movement in American literature emphasized the importance of which concept? Right answer is individualism. Next question. Which literary movement emerged as a reaction against the constraints of Victorian society and focused on aestheticism and decadence? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट विक्टोरियन सोसाइटी के खिलाफ एक रिएक्शन की तरह उभरा? तो एस्थेटिज्म एंड डेकेडेंस विक्टोरियन पीरियड का एक पार्ट है where we see the motto of art for art's sake, and Walter Pater, Oscar Wilde, A.C. Swinburne are the important figures of this literary movement. So the right answer is option A. Next question, the term magical realism is associated with which literary movement? मैजिकल रियलिज्म और फैंटेसी यानी इमेजिनेशन का एक मिक्सचर है. मंडन सेटिंग होती है इसकी एंड इट शोज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. एंड हियर आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मैजिकल रियलिज्म. मस्ट रीड इट. सो हियर द राइट आंसर इज रियलिज्म. Next question, the modernist movement was characterized by a break from traditional forms and a focus on which of the following? So modernist movement traditional form से एक break था और traditional चीज़ों पे based नहीं था और individual and subjective experience पे focus करता था.
Next question, which literary movement sought to capture the complexities of human psychology and consciousness through introspection and symbolism? Right answer is symbolism. Next question, which literary movement emerged as a reaction against the perceived excesses of romanticism and focused on restraint, order and rationality? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था और रीस्ट्रेंट यानी संयम, ऑर्डर और रैशनैलिटी यानी तर्क पे बेस्ड था? हियर द राइट आंसर इज रियलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स and experimented with language and narrative techniques? कौन सा लिटरेरी मूवमेंट ट्रेडिशनल के अगेंस्ट लैंग्वेज और नैरेटिव टेक्निक्स पे फोकस करता था? राइट आंसर इज ऑप्शन 1.